world where machines learn from experience, adjust to new inputs, and perform human-like tasks. इस वीडियो में हमने देखा कि वीडियो जनरेशन के लिए बेस्ट टूल है रनवे एमएल, जो प्रॉम्प्ट दो और फिर आपको वीडियो जनरेट करके दे देता है। ठीक है, ये इस टाइम पे सबसे बेस्ट टूल है। ठीक है, बट ये पेड है। ठीक है, ऐसे ही हम लोग ने मिड जर्नी देखा था जिसमें हम इमेज क्रिएट कर सकते हैं। सिर्फ आपको एक प्रॉम्प्ट देना पड़ेगा, अच्छा प्रॉम्प्ट देके आप इमेज क्रिएट कर सकते हो। तो ये दोनों टूल पेड हैं। तो आज हम 2 ऐसे टूल के बारे में बात करेंगे जो फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग इमेज और वीडियो क्रिएट कर पाएँ, ठीक है? तो उसके लिए सबसे पहले लगेगा हमको प्रॉम्प्ट। ये एक गिटहब रिपॉज़िटरी है, यहाँ पे ना सारे प्रॉम्प्ट हैं, ठीक है? ये प्रॉम्प्ट आप रेफ़र कर सकते हो एसईओ ब्लॉग जनरेशन के लिए या फिर इमेज जनरेशन के लिए, वीडियो जनरेशन के लिए। तो काफ़ी एडवांस प्रॉम्प्ट यहाँ पे दिए हुए हैं। तो ये प्रॉम्प्ट का यूज़ करके 2 अपने टूल हैं। एक तो इमेज जनरेशन के लिए हम लोग डाली यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हमको एक प्रॉम्प्ट देना होगा और यहाँ पे क्रिएट करना होगा, ठीक है? इस पे क्लिक करेंगे तो वो इमेज जनरेट करेगा। इस केस में इसने 4 इमेजेस जनरेट किए हैं, मैंने कुछ और इमेजेस यहाँ पे जनरेट की थी। तो ये एक प्रॉम्प्ट देके आप इमेज जनरेट कर सकते हो और फिर ऐसे ही इन वीडियो में हम लोग को प्रॉम्प्ट देना होगा, ठीक है? यहाँ पे मैंने जैसे यहाँ पे प्रॉम्प्ट दिया हुआ है, ठीक है? यहाँ पे जनरेट वीडियो कर सकते हो या फिर यूट्यूब एक्सप्लेनर वीडियो बनाना है तो इसमें आपको टाइम चूज़ करने का ऑप्शन आता है, ठीक है? यहाँ पे आपको प्रॉम्प्ट देना है, ठीक है? फिर यहाँ पे बैकग्राउंड म्यूज़िक कैसा होगा, फिर फीमेल वॉइस चाहिए, फिर इंडियन इंग्लिश वॉइस चाहिए तो उसमें मिल जाएगा, ठीक है? और फिर यहाँ पे आपको जो वीडियो यूज़ करना है, आइस्टॉक का यूज़ करना है या किसी और वेबसाइट से यूज़ करना है जो कॉपीराइट फ्री हो, तो ये वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है? फिर ऐसे ही अगर प्रॉम्प्ट के लिए अगर देखोगे यहाँ पे अगर इमेज में ये प्रॉम्प्ट आपको ये चैट जीपीटी से लिखा सकते हो या फिर यहाँ पे जो मैंने दिए हैं, ठीक है? ये सेम प्रॉम्प्ट आप कॉपी कर सकते हो जनरेट करने के लिए, ठीक है? या अपने खुद के प्रॉम्प्ट आइडियाज़ वहाँ से ले सकते हो। अभी मैं इसको करूँगा और क्रिएट करूँगा तो ये इमेज जनरेट कर देगा, ठीक है? अभी मैं इसको जनरेट कर देता हूँ और फिर यहाँ पे ये थोड़ा टाइम लेता है। ये इमेज यहाँ पे जनरेट हो रही है, तब तक हम वीडियो का देखते हैं, ठीक है? इस वीडियो के लिए मैंने क्या किया है, यहाँ पे ये जो स्क्रिप्ट है ये मैंने चैट जीपीटी से लिखा ही है, ठीक है? यहाँ पे मैंने प्रॉम्प्ट लिखने को बोला है तो इसने मुझे ये स्क्रिप्ट दी है, ठीक है? ये सेम स्क्रिप्ट मैंने यहाँ पे कॉपी की है जो एआई रिलेटेड वीडियो बनाने के लिए बोला है बेसिकली, ठीक है? तो ये अच्छा खासा प्रॉम्प्ट लिखा है इसने डिटेल और इसमें इसने काफ़ी अपने साइड से एग्जांपल और ये एआई टूल है ना तो ये आपके प्रॉम्प्ट को समझ के खुद एग्जांपल देता है इसमें, ठीक है? तो काफ़ी अच्छे से इसने आपका ऑडियो, वीडियो और दोनों जनरेट कर दिया है इसमें, ठीक है? अभी इसको कंटिन्यू करोगे तो यहाँ पे ये वीडियो आपका जनरेट हो जाएगा। अभी इस केस में ये वीडियो ऐसे दिख Dive रहा है, into ठीक the है? fascinating world of artificial तो इसका intelligence, वॉइस a भी अच्छा है। domain that is revolutionizing the way we live and work. ये मैं दिखाता हूँ बाद में। पहले देखते हैं यहाँ पे इमेज जनरेट हुई, तो यहाँ पे देखो ये 4 इमेज जनरेट हो गई, ठीक है? इसको अगर हम लोग ज़ूम करें तो ये है इमेज। तो ऐसे हम इमेज क्रिएट कर सकते हैं और यहाँ से हम वीडियो क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है? टेंसरफ्लो, पाइटॉर्च ये सारी लाइब्रेरी का यूज़ करके हम लोग मॉडल बना सकते हैं और वो मॉडल को हम लोग ट्रेन और टेस्ट कर सकते हैं और फिर उसको डिप्लॉय करेंगे। तो इसने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया है यहाँ पे डिप्लॉय करने Codes, का। user-friendly interfaces, and a multitude of resources, saving developers both time and effort. Think about it. Instead of building a neural network from scratch, you can leverage these tools to create one in just a few lines of code. In the grand scheme of things, these tools are the building blocks of AI models, the magic wands that turn data into wisdom. And with them, we're not just creating smarter machines, but also a smarter future. These tools are the building blocks of AI models. Now we'll uncover the coding process behind these models. Coding an AI model is like baking a cake. You need the right ingredients in the right order and a bit of patience. Let's embark on a journey into the kitchen of artificial intelligence, where we'll whip up a basic machine learning model. First, let's set up our development environment. Think of it as preheating your oven.
we'll need a suitable platform for coding, such as Jupyter Notebook or PyCharm. These are where we'll mix our ingredients and bake our AI cake. Next, we import the necessary libraries. This is akin to gathering all the ingredients for your cake. In coding, these ingredients are Python libraries like TensorFlow, PyTorch, or scikit-learn. These libraries provide us with the tools we need to create, train, and test our AI models. Now we move to the exciting part, creating our basic machine learning model. This is where we mix our ingredients. We start by choosing a suitable algorithm. This could be a simple linear regression for predicting house prices, or a complex deep learning model for recognizing images. The algorithm you choose depends on the problem you're trying to solve. But before we feed our data to the model, we need to pre-process it. This involves cleaning our data and transforming it into a format that our model can understand. Think of it as sifting your flour and measuring out your sugar. We might remove any irrelevant data, handle missing values, or normalize the data to make it easier for our model to digest. Once our data is ready, we define our model's architecture. We decide how many layers our model will have and how they will be connected. This is like deciding whether we're baking a single-layer cake or a multi-tiered masterpiece. We then feed our data into the model, a process known as training. This is where the baking happens. Our model learns from the data, adjusting its internal parameters to minimize errors. It's like baking our cake in the oven, where the heat transforms our mix of ingredients into a delicious treat. After our model is trained, we need to evaluate its performance. We do this by testing it on unseen data. If our model makes accurate predictions, it's like our cake coming out of the oven perfectly baked. If not, we might need to adjust some parameters or choose a different algorithm and bake it again. Coding can be challenging, but with practice and patience, it can be mastered. And just like in baking, sometimes the first cake doesn't come out perfect. But don't be discouraged. Keep tweaking your recipe until you get it just right. In our next section, let's explore some real-world applications of AI. Remember, the proof of the cake, or in this case, the AI model, is in the eating. AI is not just about robots and sci-fi movies, it's making a significant impact in our everyday lives. This statement couldn't be more true, as the world around us is already being shaped by AI in ways we may not even realize. Take a moment and think about the last time you uploaded a photo on social media. When you tagged your friends, did you notice how the platform automatically recognized their faces? That's image recognition, an application of AI at work. It's a technology that's not only used in social media, but also in security systems, medical diagnostics, and even in self-driving cars. Now let's consider another example. Have you ever wondered how voice assistants like Siri or Alexa understand and respond to your commands? That's courtesy of natural language processing, another significant AI application. It's the technology behind not just voice assistants, but also chatbots, translation services, and sentiment analysis tools. And who can forget the power of recommendation systems? They're the reason why your favorite streaming platform seems to know your taste in music or movies so well. By analyzing your past behavior and preferences, these AI-driven systems can predict and suggest content that you're likely to enjoy. These real-world applications of AI are transforming industries far and wide. In healthcare, AI is being used to predict diseases and assist in surgeries. In the automotive industry, it's powering the development of autonomous vehicles. In retail, it's helping businesses personalize customer experiences and predict sales trends. And these are just a few examples. From agriculture to entertainment, from finance to education, AI is revolutionizing the way we live, work, and play. It's helping us solve complex problems, make informed decisions, and create a more efficient and personalized world. तो हमने देखा कि कैसे एक अच्छा प्रॉम्प्ट पास करके हम लोग रियल लाइफ एग्जांपल के साथ एक ऑडियो और वीडियो जनरेट कर सकते हैं. This isn't a scene from a sci-fi movie, but the reality we are living in thanks to artificial intelligence. Artificial intelligence, or AI as it's commonly known, is a branch of computer science that aims to imbue software with the ability to analyze its environment using either predetermined rules and strategies or patterns derived from data. So, how does it work? Well, it all begins with algorithms. Think of an algorithm as a recipe.
It's a set of instructions that guide the process of problem solving or data analysis. These algorithms form the backbone of AI, enabling machines to learn patterns and make decisions. Now imagine algorithms on steroids. That's what we call neural networks. These are intricate algorithms modeled after the human brain. They are designed to recognize patterns and they interpret sensory data, a key feature in AI technologies like voice recognition, image recognition, and natural language processing. But for these neural networks to function, they require data, lots and lots of data. This is where data training comes into play. The process involves feeding data into the algorithm to help it learn and improve. For instance, to teach a machine to identify a cat, you need to expose it to thousands of cat images. Over time,